गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंजेस। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है डेमोग्राफिक चेंजेस को स्टडी करने के लिए होम मिनिस्ट्री के अंडर। और ये अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंजेस जो कि इलीगल इमिग्रेशन या फिर बाकी के अबनॉर्मल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, उसे जो है ये स्टडी करेगा। ये कमेटी जो है ये हेडेड होगी बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर जी, और बाकी के इसमें मेंबर्स भी होंगे। इवन जॉइंट सेक्रेटरी जो फॉरेनर्स डिवीज़न के हैं होम मिनिस्ट्री के, वो भी इसमें मेंबर सेक्रेटरी होंगे। और ये कमेटी 1 साल के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। अब यूनियन होम मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा है कि डेमोग्राफिक चेंज जो है वो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन और बाकी के एबनॉर्मल रीजंस की वजह से हो रहा है, और उसकी वजह से जो है नेशनल सोवरेनिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल कोहेशन, इन सबको रिस्क है। अब उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे डेमोग्राफिक शिफ्ट्स हो रहे हैं बॉर्डर और सेंसिटिव रीजन्स में जिन्हें हम सिंपल फर्टिलिटी और मॉर्टेलिटी ट्रेंड से जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये कमेटी एग्जामिन करेगी डेमोग्राफिक शिफ्ट्स अक्रॉस रीजन्स एंड कम्युनिटीज़, और ये एनालाइज करेगी कॉजेज़ जैसे कि इलीगल इमिग्रेशन, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, फर्टिलिटी वेरिएशंस, इकोनॉमिक माइग्रेशन, सोशल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स। अब ये पैनल जो है स्टडी करेगा एबनॉर्मल सेटलमेंट पैटर्न्स। स्पेशल फोकस एरियाज होंगे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स, ट्राइबल रीजन्स, अर्बन सेंटर्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इस कमेटी की कि वो एक रिकमेंड करें परमानेंट और स्ट्रीमलाइन मैकेनिज्म्स की कैसे आइडेंटिफाई करें, डिटेन करें और डिपोर्ट करें इलीगल इमिग्रेंट्स को। प्रोसेस जो है वो बिल्कुल लीगल, फेयर और टाइम बाउंड रहेगा। ठीक है। अब कमेटी को और भी एक टास्क दिया गया है कि एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बताओ पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का। आपको पता है ना, इंडिया का फर्टिलिटी ट्रेंड जो है वो स्टेडी डिक्लाइन दिखा रहा है, और अभी तक सेंसस का हमको पता भी नहीं है कि 2000 इस करंट क्या जो है वो पॉपुलेशन का क्या हिसाब है, क्योंकि नेक्स्ट सेंसस जो है वो 2027 में होने वाला है। इनफैक्ट अभी चल ही रहा है। तो ये मूव जो है, एक लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन जो है रूलिंग पार्टी ऑफ द सेंटर की जो है दिखा रही है कि वो हमेशा से कंसर्न्स दिखाते हैं कि इलीगल इमिग्रेशन हो रही है बांग्लादेश से, रिलीजियस डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इलेक्टोरल और कल्चरल इम्पैक्ट्स हो रहे हैं ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर। लेकिन कुछ की इश्यूज़ भी हैं, जैसे गवर्नमेंट जो है वो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस को बॉर्डर सिक्योरिटी थ्रेट्स के साथ लिंक कर रही है। जो फ्रेमवर्क है वो डिबेट्स रेज करेगा अबाउट कंसर्न अबाउट सिटीजनशिप राइट्स। एक्सपर्ट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि क्या डेफिनेशन होगी अब नॉर्मल डेमोग्राफिक चेंज की। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्वाड समिट। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट जो है उसमें न्यू इनिशिएटिव्स अनाउंस किए गए हैं एनर्जी सिक्योरिटी, क्रिटिकल मिनरल्स, मैरीटाइम सर्वेलेंस और रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स पर। तो क्वाड जो है एक स्ट्रेटजिक ग्रुप है इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया का, जो प्रमोट करना चाहते हैं फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन। आइडिया जो है क्वाड का इमर्ज हुआ जब 4 कंट्रीज़ ने कॉपरेट करना शुरू किया 2004 की इंडियन ओशन सुनामी रिलीफ एफर्ट्स में। बाद में फॉर्मली इसको प्रपोज किया गया 2007 में, लेकिन इसको जो है वो कई सालों तक जो है इस पर कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ, तो इसको 2017 में रिवाइव किया गया। क्वाड का जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो स्ट्रेंथन करना है रीजनल स्टेबिलिटी और एड्रेस करना शेयर्ड चैलेंजेस इंडो पैसिफिक रीजन में, और प्रमोट करना जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, इंश्योर करना रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, स्ट्रेंथन करना डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, सपोर्ट करना क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। क्वाड स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक ऑर्डर को ये सपोर्ट करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को। इंडिया क्वाड को देखता है एज अ मैकेनिज्म टू सिक्योर सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एनहेंस चाहता है करना कॉपरेशन डिफेंस, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन्स में। अपने डिपेंडेंस जो है कंसनट्रेटेड सप्लाई सोर्सेज पर रिड्यूस करना चाहता है। इंडिया कहता है कि क्वाड किसी पर्टिकुलर कंट्री के अगेंस्ट नहीं बनाया गया है, बल्कि एक मल्टी अलाइंड फॉरेन पॉलिसी है। क्वाड कंट्रीज एम्फोसाइज करती हैं कि अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ ग्लोबल कमर्स हो, रेजिलिएंट एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स हों। क्वाड ने कुछ मेजर्स भी अनाउंस किए हैं क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ सप्लाई चेन्स को से रिलेटेड। क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और चारों कंट्रीज जो हैं वो रिड्यूस करना चाहती हैं डिपेंडेंस ऑन कंसनट्रेटेड ग्लोबल सप्लाई चेन्स। ठीक है। तो ये ग्रुपिंग जो है रीअफर्म कर रही है सपोर्ट फॉर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, खासकर यूएन क्लॉज। क्वाड ने एक्सपैंड की है एंगेजमेंट विद पैसिफिक नेशंस ऑल्सो। फिजी के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स कोऑपरेशन को बनाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिया यूएस क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क। ये टॉपिक भी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 11th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ
इंडिया और यूएस ने अपना बायलैटरल इंडिया यूएस क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क भी अनाउंस किया है। जो इमीडिएट ट्रिगर था इस फ्रेमवर्क का वो था कि चाइना ने जो है लाइसेंसिंग रिजीम इम्पोज कर दिया रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सपोर्ट्स पर 2025 में। इससे इंडियन इंडस्ट्री को डायरेक्टली इम्पैक्ट हुआ। चाइना जो है वो 90% ऑफ ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल्स प्रोसेसिंग को जो है वो कंट्रोल करता है, और इंडिया जो है 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट है कुछ की क्रिटिकल मिनरल्स पर। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होंगे इंडिया यूएस के फ्रेमवर्क के? डीपन करना कॉपरेशन अक्रॉस क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ सप्लाई चेन, स्ट्रेंथन करना रिजिलियंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स, प्रमोट करना कोलैबोरेशन, एक्सेलरेट करना R&D कोलैबोरेशन, अलाइन करना डोमेस्टिक लॉज को रेगुलेशंस को बोथ कंट्रीज़ के, टाइटन करना कंट्रोल्स को एड्रेस करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। इंडिया यूएस का जो क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क है ये ओवरनाइट नहीं बना है। 2025 में ही शेयर्ड स्ट्रेटजिक प्रायोरिटी थी इंडिया यूएस ट्रस्ट के अंडर। फरवरी 2026 में इंडिया जो है वो सिग्नेटरी बना यूएस लेड पैक्स सिलिका इनिशिएटिव का। फिर जो है हम इंडिया और यूएस दोनों ही जो है यूएस लेड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के भी मेंबर्स हैं। तो इंडिया जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए जो है वो एक्शंस ले रहा है। जैसे प्रेस नोट 3 निकाला था हमने कि इंडिया ने अपनी FDI पॉलिसी को चेंज किया लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के साथ, लेकिन फिर भी FDI नहीं आ पा रहा है बिकॉज ऑफ वेस्ट एशियन वॉर। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस रूल्स 2026। यह नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनाया गया है इसमें, जो कि एक सेंट्रल अथॉरिटी होगा ग्रांट करने के लिए रिकॉग्निशन टू नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज़। इसमें एक चेयरपर्सन और 2 मेंबर्स होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। चेयरपर्सन और बाकी के मेंबर्स जो हैं वो 3 साल के लिए होंगे या फिर 65 साल तक के जो भी मतलब अर्लियर होगा। रीअपॉइंटमेंट हो सकती है उनकी एक टर्म के लिए। बोर्ड जो है वो मेंटेन करेगा रजिस्टर ऑफ एफिलिएट यूनिट्स ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज़। अब इसमें नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल भी है जो डेडिकेटेड एडजुडिकेटरी बॉडी होगा स्पोर्ट्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स का। सिविल कोर्ट्स पे कम जो है रिलाय करना पड़े इसलिए ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है। इसमें भी चेयरपर्सन और 2 अदर मेंबर्स होंगे। चेयरपर्सन जो है वो एक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मतलब या रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे। पावर्स क्या है इसकी? पावर सिमिलर टू दोज ऑफ अ सिविल कोर्ट है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पैमाना पोर्टल। ये टॉपिक भी गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो मॉनिटरिंग कर रही है सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की थ्रू पैमाना पोर्टल। ठीक है, तो पैमाना पोर्टल क्या है? सेंट्रलाइज्ड नेशनल रिपोजिटरी है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की। इसको इंटीग्रेट भी किया गया है DPIIT के इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पोर्टल के साथ। तो एक तरह से सिंगल विंडो इंटरफेस है मिनिस्ट्रीज़ के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए, एजेंसीज़ के लिए कि अपलोड, ट्रैक और रिव्यू कर सकें अपनी प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन। इसमें रियल टाइम डैशबोर्ड्स हैं, एडवांस डेटा एनालिटिक्स है, और ये 150 करोड़ रुपए से ऊपर के जो प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रल प्रोजेक्ट्स, उनको जो है मॉनिटर करने के लिए बनाया गया है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मेकेदातु प्रोजेक्ट। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डिसमिस किया है एक पिटीशन तमिलनाडु ने जो फाइल की थी नवंबर 2025 के डिसीजन को रिव्यू करने के लिए। और मेकेदातु प्रोजेक्ट क्या है? ये मल्टीपर्पज़ ड्रिंकिंग वाटर एंड पावर प्रोजेक्ट है। कंस्ट्रक्शन होगी जिसमें बैलेंसिंग रिजर्वायर की कनकपुरा के पास रामनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में। प्रोजेक्ट जो है वो कॉन्फ्लुएंस ऑफ कावेरी रिवर विद अर्कावती रिवर के पास होगा। और तमिलनाडु क्योंकि लोअर राइपेरियन स्टेट है तो वो अपोज कर रही है इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि स्टेट जो है वो अफेक्टेड होगा अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो KVIC जो है उन्होंने हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। रिकॉर्ड सेल्स की है 1,87,000 करोड़ रुपीज़ के प्रोडक्ट्स की। तो KVIC एक स्टेचुटरी बॉडी है, एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर। प्लान, प्रमोट और ऑर्गेनाइज और इम्प्लीमेंट करती है प्रोग्राम्स रिलेटेड टू खादी एंड अदर विलेज इंडस्ट्रीज रूरल एरियाज़ में। तो ये एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड करना इसका सोशल ऑब्जेक्टिव है। ये स्ट्रेटजिक रिजर्व ऑफ रॉ मटेरियल्स मेंटेन करती है, एनहेंस करती है सेल एंड मार्केटिंग ऑफ खादी, प्रमोट करती है रिसर्च इन द प्रोडक्शन टेक्निक्स। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is High Level Committee on Demographic Changes. This topic is important for your social issues. So Union Government has constituted a High Level Committee on Demographic Changes under the Home Ministry to examine unnatural demographic changes or which are arising from the illegal immigration and other abnormal factors.
This committee will be headed by a retired Supreme Court Judge, Prakash Prabhakar Navlekar, and it would also include other members as well. Even Joint Secretary of Foreigners Division, Ministry of Home Affairs will be acting as a member secretary. The panel has been asked to submit its report within 1 year. According to Union Home Minister, demographic changes caused by illegal infiltration and other abnormal reasons pose challenge to national sovereignty, internal security, law and order, social cohesion, tribal identity. So, certain demographic shifts in border and sensitive regions cannot be explained solely through normal fertility and mortality trends. So, this committee will also examine demographic shifts across regions and communities. It will analyze causes like illegal immigration, cross-border movement, fertility variations, economic migration, environmental factors, and administrative failures. This panel will study abnormal settlement patterns. Special focus areas would include border districts, tribal regions, urban centers, and industrial corridors. A major responsibility of the committee will be to recommend a permanent and streamlined mechanism for identification, detention, and deportation of illegal immigrants. The process is going to be legal, fair, and time bound, and the committee will also propose measures to strengthen border management, identification systems, monitoring mechanisms, center state coordination. Committee has also been tasked with recommending an institutional framework for population stabilization. So, this move is reflecting a long-standing position of the current ruling party at the center, and they have repeatedly raised concerns over illegal immigration from Bangladesh, changing religious demography, and electoral and cultural impacts in eastern and northeastern states. But there will be certain issues like the proposed framework may raise debates about concerned citizenship rights. Experts may also raise questions regarding the definition of abnormal demographic change. So the next topic is Quad Summit. This topic is important for your international relations. So Quad Foreign Ministers meeting recently announced new initiatives on energy security, critical minerals, maritime surveillance, and resilient supply chains. So Quad Security Dialogue is a strategic grouping of India, US, Japan, and Australia, which aims to promote a free, open, inclusive, and rules-based Indo-Pacific region. The idea of Quad emerged after cooperation from 4 countries during 2004 Indian Ocean tsunami relief efforts. It was but this Quad grouping was formally proposed in 2007, and it remained slow for several years before being revived in 2017. So Quad focuses on strengthening regional stability and addressing shared challenges in the Indo-Pacific. Its major objectives include promoting maritime security and freedom of navigation, ensuring resilient supply chains, strengthening disaster response and humanitarian assistance, supporting clean energy transitions. So, Quad is strategically important because it supports a rules based Indo Pacific order complementing India's Act East policy. India sees Quad as a mechanism to secure sea lanes of communication in Indian Ocean, enhance cooperation in defense, technology, and supply chains, reduce dependence on concentrated supply sources. At the same time, India maintains that the Quad is not directed against any specific country. Quad countries emphasize the need for the uninterrupted flow of global commerce and resilient energy transportation networks. Quad also announced new measures like those related to critical minerals and rare earth supply chains. Critical minerals like lithium, cobalt, nickel, and rare earth elements are essential for electric vehicles, renewable technologies, semiconductors, defense equipment, and electronics. So, 4 countries aim to reduce dependence on concentrated global supply chains. All sides reaffirmed their support for freedom of navigation and respect for international law, particularly the UN clause. The Quad also expanded engagement with Pacific island nations, and report also highlighted plans for involving Fiji's port infrastructure and logistics cooperation. So the next topic is India-US Critical Minerals Framework. This topic is important for your economy section. So India and US have signed the bilateral India-US Critical Minerals Framework. So the immediate trigger for this framework was China's imposition of a licensing regime on rare earth element exports in 2025. This directly impacted Indian industry. So this strategic context is stark.
China controls 90% of the global critical mineral processing, and India is 100% import dependent for key critical minerals. So this framework will deepen cooperation across entire critical minerals and rare earth supply chain, strengthen resilient and diversified global supply chains, promote collaboration in financing and other effective management of critical minerals and rare earth, accelerate R&D collaboration, align domestic laws and regulation of both countries, tighten controls to address national security requirements. So India-US critical minerals framework did not emerge overnight. In fact, it was being built up since last year when we signed a shared strategic priority agreement under the India-US Trust. In this year itself, India became a signatory to US-led PAC Silica initiative, and we also became members of the Mineral Security Partnership led by the US. So, apart from that, we are also inviting FDI in strategic investment through Press Note 3, where we calibrated changes in FDI policy for land bordering countries in March 2026. But still, the FDI has been slow because of the West Asia crisis. So the next topic is National Sports Board. This topic is important for your governance section. Union government has notified the National Sports Governance Rules 2026. So National Sports Board will be part of it. It will be functioning as the central authority for granting recognition to national sports bodies. It shall consist of chairperson and 2 members who will be appointed by the central government. Chairperson and every other member shall hold office for a term of 3 years or till they attain the age of 65 years. They are also eligible for reappointment for one more term. The board shall maintain a register of affiliate units of the national sports bodies. And what is the National Sports Tribunal? It will serve as a dedicated adjudicatory body for sports related disputes in the country. It is aimed at reducing reliance on civil courts. It will have chairperson and 2 other members. Chairperson shall be a member who has been a judge of the Supreme Court or the Chief Justice of a High Court, and this tribunal will have the powers similar to those of a civil court. So the next topic is Paimana portal. This topic is important for our governance section. Ministry of Statistics is strengthening monitoring of central infrastructure projects through the Paimana portal. Paimana portal will function as a centralized national repository of infrastructure projects. It is integrated with DPIIT's integrated project monitoring portal. So it will provide a single window interface for ministries, departments, and implementing agencies to upload, track, and review project information. It will feature real-time dashboards. It also includes advanced data analytics. It is mandated to monitor central sector power infrastructure projects worth 150 crore and above. So the next topic is Mekedatu project. This topic is important for our economy section. Supreme Court has recently dismissed a petition filed by Tamil Nadu to review a 2025 November decision terming the state's challenge to Karnataka's proposed Mekedatu project as premature. So Mekedatu project is a multi-purpose drinking water and power project involving the construction of a balancing reservoir near Kanakpura in the Ramnagar district of Karnataka. It is proposed at the confluence of Kaveri river with its tributary Arkavati. So Tamil Nadu, because it is a lower riparian state, it is opposing this project because the state would be affected if the project takes shape. So the next topic is Khadi and Village Industries Commission. This topic is important for our economy section. So KVIC has achieved a historic milestone in the last financial year, recording sales of over 1,87,000 crore rupees. So KVIC is a statutory body established in 1956. It is an apex organization under Ministry of MSME. It is charged with planning, promotion, organization, implementation of programs for the development of Khadi and other village industries in rural areas. The social objective is to provide employment in rural areas. It aims to build a strategic reserve of raw materials and implements for supply to producers. It also aims to enhance the sale and marketing of Khadi, to be responsible for encouraging and promoting research in the production techniques. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.